Welcome to our present discussion for the accountancy class 12. We were going through the chapter of accounting ratio. So many episodes we have done, we have discussed through the YouTube channel. This is my 14th episode, 14 number episode. Various types of ratios are there. Previously I have told you, just reminding, there are basically four types of ratios. Number one, liquidity ratio, under which current ratio and liquid ratio. Second type, solvency ratio. There are four types of ratios also under the solvency ratio: debt equity ratio, proprietary ratio, total assets to debt ratio, and interest coverage ratio. Third type of ratio we have started, activity ratio. Activity ratio is also called the performance ratio or the turnover ratio, on the basis of which ratios we can get the information regarding the company's activity, regarding the employees, workers' performance throughout the year of the company. So, if through this type of ratios, through this type of the activity ratios, however, if we have come to know from the information by analyzing the various ratios of activity ratio that the position is not so okay, then from the next year the company's financial management or the company's management will take over some preventive measures so that the employees and workers can make more activity, more positivity, can uplift the effectiveness of the companies. So, under the activity ratio, there are also four types of the ratios: inventory turnover ratio, trade receivables turnover ratio, trade payables turnover ratio, and working capital turnover ratio. First, inventory turnover ratio we have started. So, this type inventory turnover ratio is big type. So many types of sums can be developed from this topic. So, one sum again I have taken in this episode, and I am doing this sum on the board. You just look after and try to listen, try to learn. Inventory turnover ratio. Question is given: cost of revenue from operation 3 lakhs. This question is something different type. You are not asked to calculate the value of inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is given in the question. Inventory turnover ratio formula is cost of revenue from operation by average inventory. Average inventory means opening inventory plus closing inventory by 2. Cost of revenue from operation is given. That means opening inventory, closing inventory. Out of these things, anything is asked here. Just look here. Find out the value of opening inventory. यहाँ पे देखो ओपनिंग इन्वेंटरी का वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का रिजल्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओपनिंग इन्वेंटरी का वैल्यू कितना होगा इफ अगर ओपनिंग इन्वेंटरी इज rupees 10,000 less than the closing inventory. That means if opening inventory is 10,000 less than the closing inventory, मतलब closing inventory भी नहीं दिया आपको, opening inventory का भी वैल्यू नहीं दिया, if closing inventory मेरे पास मिल जाता है तो closing inventory से 10,000 माइनस करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंटरी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लू दिया है ओपनिंग इन्वेंटरी इज रुपीज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंटरी. तो कैसे निकलेगा यहाँ पे? जस्ट समथिंग इंटेलेक्चुअलिटी इज हियर. जस्ट लुक एट फर्स्ट इन सॉल्यूशन पार्ट हाउ यू विल स्टार्ट दिस टाइप ऑफ द सम. वेरी लिटिल सम. 2 marks will be given for this. 2 marks in the question board exam. Not more than 4 minutes you can take. At first, inventory turnover ratio result is given 6 times.
तो इसका फॉर्मूला पहले लिखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी। Cost of revenue from operation is given in the question 3 lakhs. Average inventory not given. Average inventory you have to calculate. Average inventory. Formula: opening inventory plus closing inventory by 2. Right now, I don't know what is the value of opening inventory and what is the value of closing inventory. But one clue is given here through which I can calculate. How? Just I am replacing these things here. Here I am writing because there I have to do something calculation. Average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory by 2. Inventory turnover ratio is equal to, formula I have written, cost of revenue from operation given, I have written here whatever given in the question, 3 lakhs, average inventory is missing, I have to calculate. But inventory turnover ratio result is given in the here 6 times. So in this place 6 I can write is equal to 3 lakhs. It is written already here of mine. So 6 is equal to 3 lakhs by average inventory. Okay. If cross multiplication we can make, the average inventory into 6 is equal to 3 lakhs. Again, average inventory is equal to 3 lakhs by 6 will be coming here. So 50,000. Average inventory is equal to 50,000. Now look at here. Average inventory is equal to, I know formula is opening inventory plus closing inventory by 2. Average inventory is, I have got 50,000. Come look at here. Now in the place of average inventory I can write 50,000 is equal to opening inventory plus closing inventory by 2. Now in the question it is given that opening inventory is rupees 10,000 less than the closing inventory. तो यहाँ पे देखो, let closing inventory is equal to x. अगर closing inventory x होगा तो therefore opening inventory is 10,000 less than the closing inventory. तो closing inventory x से 10,000 कम है, मतलब x minus 10,000 is opening inventory and x is the closing inventory. ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से एवरेज इन्वेंटरी आता है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है यहाँ पे x माइनस 10,000, तो ओपनिंग इन्वेंटरी की जगह पे लिखेंगे x माइनस 10,000 ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी को हम कितना एज्यूम किए x by 2, तो 50,000 इज इक्वल टू x के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, और ये x के सामने भी प्लस है, मतलब अब 10 तक जो साम सीखे हैं अकाउंट मैथमेटिक्स में उसका मिनिमम नॉलेज लग रहा है यहाँ पे। x प्लस x कितना होता है बेटा 2x माइनस 10,000 बाई
2. Okay, 50,000 into 2 is equal to 2x minus 10,000. कोई यहाँ पर 2x माइनस 10,000 से 2 को कॉमन लेके ब्रैकेट में x माइनस 5,000 बाई 2 कर सकता है, 2 काट सकता है उस टाइम पे, वो नहीं करके ये भी कर सकते हैं. बोथ इज करेक्ट. 50,000 इंटू 2 हाउ मच? 1 लाख. और ये 10,000 दूसरा साइड में आएगा तो कितना होगा? प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2x रहेगा इधर. तो हम लोग लिख सकते हैं 1,10,000 इधर और उधर है 2x. तो 2x इज इक्वल टू 1,10,000 वी कैन राइट. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1,10,000 बाई 2. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ, साइड चेंज होगा तो डिवाइड होगा. दैट इज 55,000. ओके, सो 55,000 किसका वैल्यू निकला? x का वैल्यू निकला. x क्या पकड़े थे हम यहाँ पे? देखो, क्लोजिंग इन्वेंटरी लिए थे x को. दैट मीन्स 55,000 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी. ओके, नाउ लुक एट हियर. Therefore, closing inventory is equal to 55,000. और क्वेश्चन में क्या बोला गया था? Opening inventory is rupees 10,000 less than the closing inventory. Okay. Therefore, opening inventory is equal to 10,000 less than the closing inventory. So 55,000 minus 10,000. So 45,000. तो ओपनिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करने बोला था. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी. सो ओपनिंग इन्वेंटरी हम लोग का वैल्यू निकला है 45,000. ओके, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन? दिस क्लू इज गिवन बाय इंटेलेक्चुअलिटी, बाय इंटेलिजेंट लेवल. IQ लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए. And my personal suggestion for this type of the sums, for accounting ratio chapter sums, you have to watch the TV only a particular serial, whatever the crime branch वगैरह सीरियल जो होता है वो सीरियल देखना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द क्लू बेस इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा फॉर्म करते हैं इंसान के अंदर वो सीरियल देखने से. तो उससे, लेकिन वो देखने का मतलब ये गाइड नहीं कर रहे हैं हम कि वो देखो और उसके साथ साथ तुम वैरायटी सीरियल देखने बैठ जाओ. ओके, सो जस्ट यू इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअलिटी पावर एंड go through this, understand, try to do the sum from the book and try to learn properly. Okay, thank you very much.